Good evening to all of you. Good evening, JNV Anam students. Good evening, JNV Ramnagar students. And good evening to JNV Raichur students. How are you guys? Oh shit. Shiva is your biology teacher name. No, no, no. When you are in class 11th, na, so one of the student named Shiva. That is used to be answer all of the questions that I put on. That particular students I'm asking for. And Shiva is the nickname that I have given to him. He has a very big name. ठीक है? Okay, you are the only one. Then I have to recheck the recordings and get back to you in the investigation of finding Shiva. Okay. So I have asked you that Ramnagaram and Ramnagar is same or not. You haven't answered at that time. Okay. So good evening to all of you present here. I welcome you all in this session of electrostatics. And as usual, we have promised that after every 2 to 3 lectures, we are going to revise the concepts and do some questions based on the concept that we have did in the class. Okay. So firstly, make sure the screen is visible to you and I'm audible to you. If it is so, please put a yes in the chat box rapidly. Then we will move further with the topics. Okay. Okay. And what about you, JNV Yanam and JNV Raichur? Got it. Chali. So in the previous session, we have just finished the chapter, the electrostatics part 1. Okay. In the complete chapter, what we have did, we have learned about the Coulomb's law of attraction and repulsion. Okay. What is the effect on Coulomb's law when we put the charge particle in a particular medium? What is the concept of dielectric? Okay. And specifically, we have also paid attention to the principle of superposition, and it is the most asked topic of electrostatics. Okay, so we prepare with that also. Now, after that, we have discussed the dipole, electric dipole के बारे में हमने बात की थी. And most importantly, what is the torque and energy on electric dipole when it is placed in a uniformly external field. Okay. Although we have also discussed some advanced concept like what is the force applied when dipole is put in a non-uniform electric field. In that case also we have discussed, okay, that force is nothing but minus of du by dr. है ना? So now, and in the latest session we have did the Gauss law. ठीक है ना? Gauss law and its application from the last 2 lectures. Now the chapter is finished. So your work is to go through the NCERT, go through the Avanti module. Okay. Read this chapter one by one, page, whatever the number of pages, read the page one by one, line by line. Do all the numericals present in the sheet. Okay. On that particular module that you will get. And do all the numericals of NCERT. Okay.
Specifically, whatever the questions we are going to discuss, okay, in this session, they are not at the NCRT level. They are in between of JEE Advanced and JEE Mains. Okay, so that who is preparing for NEET examination will get the conceptual clarity of that particular level. Okay, so they will not suffer in that case. Okay, because most of the NEET student will face this problem. They will learn the formula because most of the questions are formula based. A little bit of concept is required, but to improve the rank, na, to improve rank, to improve higher marks, you have to be very clear with the fundamentals and very clear with your concepts. So when you did a particular questions that include 2 to 3 or 5 concept in it, then the conceptual clarity that you will get is next level, and it will prepare you for your upcoming examination, whether it is NEET or JEE Advanced. Okay? Now, so शुरू करते हैं. Let's just get started with it. And one thing more I want to discuss with you guys. When are you going for off? When is your summer holiday started? When will your summer holiday start? You have any idea about it? JNV Ramnagar student and JNV Yanam students. 1st May onwards. Okay. और 1st May से it will continue to up to July. है ना? Complete June is off for you. Complete May is off for you. Am I right? Okay. So listen to me. The classes, this electrostatic enable or this enable class 12 that we are running will be continue in May. Okay? Got it? So, but in May you are at your home. Okay? You are somehow in your comfort zone. So what I need from your side that you should be attentive in the May. Okay? And we will make the session more interactive because I think there is some problem when you are attending the class like project with the help of projector. So there will be a communication lag, I think, है ना? उतना अच्छे से communicate नहीं हो पाता है from your end to me, है ना? ठीक है ना? So when you are at home, so there is no foundation. You have your mobile phone, you have your tablet, whatever is the device that you are getting that you will be logging on. Okay. So I need each and every one of you to be present in the class. We will open the camera, make the live discussion. Okay. Make the class very interactive and funny. Okay. So that is what I want from your side. And I believe that you will not deny this and you will not make me feel like that Arun sir is not correct about us. Okay. Because you are the very regular students of my class. If I talk specifically, I'm talking about JNV Ramnagar and JNV Yanam students. They are really very attentive and really very progressive students that I have seen. So that kind of participation I would expect from you guys in your holidays also. I hope that it will sucks कि holiday में भी आराम नहीं करने को मिल रहा, but it will give you the benefit. ठीक है? क्योंकि you will be advanced in your syllabus by 1 month and 1 month means at least 2 chapters. ठीक है? So when you are advanced in your syllabus by 2 chapters, you will feel that when you came back to the school and start reading and your regular teacher is teaching that topic that you have already covered up to advanced level. So that particular time you can utilize for your preparation. Okay. So that is going to help.
And it is not for, like, it is not for the lifetime process you have to do this process. Okay, this is only for 1 month. Okay na? So try to be attentive in your whenever your the summer holiday will start. Okay, so try to be attentive in these days also, because I would be there, so which means I am also preparing for you. Okay, I also like holidays, but when it comes to the duty, when it comes to study, that holiday doesn't mean anything. Okay, the same thing I will expect from you guys. Either it is your choice finally, but I hope. So will you be present in the class at that time? JNV Raichur, JNV Yanam, JNV Ramnagar students. Will you be present then? Any response? Okay, good. So JNV response, JNV Yanam ने तो अपना response दे दिया है भाई, and that is really deserve a clap. What about you, JNV Ramnagar? Are you not guys not attending the class during your week off? ठीक है, बताइए. Okay, so now move on to the agenda of today's class. So today's class is based fully dedicated to the revision and question discussion. Okay, and I have selected two topics only from where the weightage of the question is being uh, high. Okay, and some of the question based on that. We will also be doing some revision and question discussion session of electrostatic during the next chapter also. Okay, and we will cover all the types of numerical and all the types of conceptual question that is being. So the very first topic that I have selected is this Gauss law that we have covered recently. तो आपको इसे recall करने में भी ज़्यादा problem होगी नहीं. ठीक है? So what is the Gauss law? Everyone अपनी क्लास में बोलो सब. अपनी नोटबुक ओपन करो and read it aloud. What is Gauss law? Gauss law is the closed integral of E vector dot ds vector or equals to phi electric q enclosed upon epsilon, which means charge flux through any closed surface is equals to the charge enclosed by that particular surface divided by epsilon naught. ठीक है, यही हमारा गॉस लॉ है. ठीक है, गॉस लॉ में सबसे जरूरी चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? दिस क्यू इनक्लोज्ड. क्यू इनक्लोज्ड इज द चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस. ठीक है, सपोज दिस इज द सरफेस. इस सरफेस के इनसाइड में जो भी चार्ज है, दैट पर्टिकुलर चार्ज इज came into the expression of phi electric flux calculate panel. Now, based on this, a very simple question I'm giving to you. Suppose this is a closed surface, and inside of it we have 3 coulomb, 5 coulomb, and 6 coulomb. And outside of it, we will be having -2 coulomb, -5 coulomb. Now, what is the flux through this surface? Tell me in the chat box. What is the flux through this surface? Or specifically tell me what is the Q enclosed that you will take in the to calculate the flux. What is the value of flux? बताइए. Very good, JNV NM students. What about you, JNV Ramnagar students? JNV Raichur? Yeah, very good. Flux is 8 by epsilon naught and charge enclosed is 8. What about you, JNV Ramnagar students? You have opened the camera, na?
अभी आप रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो, बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। गॉट इट। सो फाई इनक्लोज क्या होता है? इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। कितना चार्ज इनक्लोज हुआ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है। चार्ज इनक्लोज कितना है इस सरफेस का? 5 कूलम। चार्ज क्या है? स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी को एज साइन हम ऐड करते हैं विद द साइन। 5 कूलम, 6 कूलम -3 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। 5 और 6, 11 -3 इज 8 कूलम। तो दिस विल बी 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स। क्लियर है? नाउ सबको क्लियर हुआ? अब इसमें और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है, और कॉन्सेप्चुअल चीज क्या ऐड कर सकते हैं गोस लॉ? अभी बताता हूँ। सपोज दिस इज द सरफेस। Okay, this red color is not visible clearly. Don't worry, we will remove this red color. ये कलर विजिबल है, येलो कलर इज विजिबल। आप उस अपने जो प्रोजेक्टर से जो इमेज आ रही है ना, उसकी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लो। ठीक है, देखो। सपोज दिस इज अ सरफेस, और इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो -Q+2Q। एंड आउटसाइड में जो चार्ज है 5Q, 3Q है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना हुआ? ओके, 2Q - Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी चार्ज पे डिपेंड करेगी? नो, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड will be the field because of all the charges, all charges। ठीक है ना, ये सभी चार्जेस से फील्ड होती है, विच मीन्स 5Q इज ऑल्सो, 3Q is also involved in the expression of electric field. So whatever the field you will calculate, it will not just depends on the internal charges that is present on this inside the surface. It will also depends on the charges which is present outside the surface. ठीक है, this kind of MCQ will came in the examination and ये आया भी है। ठीक है, क्लियर है? Now, so this is the Gauss law. Now, applications of Gauss law. So in the previous two session में what we have did? We have did the application of Gauss law. So first of all, electric field due to line charge we have calculated, which is coming out to be lambda upon 2 pi epsilon naught r. Lambda upon 2 pi epsilon naught into r। ये हमारी फील्ड आई। अब ये r कैसे मेजर होता है, ये जरूरी है जानना। ठीक है, सपोज दिस इज द लाइन चार्ज, पॉजिटिव लाइन चार्ज है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। अब ये r कैसे मेजर होगा? r इज टू बी मेजर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज। ये r है। ठीक है, वॉट इट? सो वट एवर द पॉइंट यू विल टेक, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। ठीक है ना? तो एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r,
What is the electric field? Electric field is to be lambda upon 2 pi epsilon naught small r. ठीक है. Now the question to you, that electric field due to line charge at small r is equals to 5 capital R and small r is equals to R2 is equals to 10 R. ठीक है. So this is the E1, this is E2. Find the ratio of R1 and R. Sorry, E1 about. Calculate this ratio. बहुत सिंपल है. R1 and R2 की वैल्यू पुट करनी है. टेक द रेशियो. डू इट. JNV Yanam, Ashwin, JNV Raichur, Ramnagar, everyone answer in the chat box. ये बहुत सिंपल है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, JNV Yanam स्टूडेंट्स, गर्ल्स इज ऑल्सो आंसरिंग ना? JNV Ramnagar is also okay. हाँ, both has to be participate. Ashwin, what is the answer? JNV Ramnagar, what is the answer? Raichur. Okay, JNV Ramnagar has also answered. Very good. Now let's see. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या स्मॉल आर ले लो, है ना? विच मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. E1 बाई E2 R2 बाई R1. R2 की वैल्यू क्या है? 10R. R1 की वैल्यू क्या है? 5R. R and R will cancel out, it will become 2, which means E1 by E2 is equals to 2 is to 1. So the ratio is 2 is to 1, not 1 is to 2. अब जिसने 1 is to 2 आंसर किया है ना, अपना आंसर करेक्ट करो और बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? एवरीवन बताओ बताओ. एनी काइंड ऑफ डाउट? ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. ओके. ठीक है. नाउ दिस वन, इसके बारे में बात कर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट. अब वो शीट कैसी थी? सपोज दिस इज द शीट. इमेजिन कर पा रहे हो ना 3D में? ऐसे रखी हुई है ये. एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. ऐसी हमारी कोई शीट है. अब इस शीट को मैंने, ये ऐसे रखी हुई थी शीट ऐसे, अब मैंने इसे ऐसे घुमा दिया, तो कैसी दिखेगी अब? ऐसी दिखेगी ना, सिर्फ एक लाइन विच इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. इससे इससे भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर कर रहे हैं. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था ना? क्लियर है? नाउ इफ दिस शीट, this is the sigma upon epsilon naught. Now the question to you, suppose we have two sheet here. One is positive and one is negative. Now what is the field inside it?
at this particular point, and this point is at same distance. और एक्सप्रेशन भी आप देख लो तो डिस्टेंस का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा. तो दिस पॉइंट पी पे व्हाट इज द नेट फील्ड बताओ. एंड आई एम गिविंग यू द ऑप्शन, either it is 0 or sigma upon 2 epsilon naught. Third option is sigma upon epsilon naught. बताओ. अब देखो. Okay, okay, okay. Now let's see what is the correct answer. Got it, got it. Very good. The all of you are responding. देखो मैंने आपको बताया था whenever the positive charge you will encounter, the field will be away from that point. ठीक है. इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है, फील्ड की डायरेक्शन, एंड इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द फील्ड वेक्टर विल बी अवे. इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज, देन फील्ड वेक्टर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नाउ at this particular point P, due to this negative charge, what should be the direction of electric field? It should be in this direction, attractive. Got it? Clear है? Now due to this positive charge, what should be the direction? इससे भी तो इसी तरफ होगा. It will try to repel it, and negative charge try to attract it. नेगेटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? इनसाइड ऑफ इट. एंड पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड. अब देखो, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, these positive charges, the field will be in this direction, repel करेगा. And due to this negative charge, field will be in this direction. क्लियर है? नाउ अब पहले ही आपने डायरेक्शन ले ली, सेम डायरेक्शन है. तो जब आप डायरेक्शन यहाँ पे दिखा देते हैं ना, डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, then you do not need to enter the minus and plus in that case, because you are already told about the direction. Whenever the direction is not clear to you, then you will take the minus. Okay. So the E net here would be sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. So this will become sigma upon epsilon because net field is in the direction. ठीक है. क्लियर है? अब यही क्वेश्चन अगर मैं बाहर की फील्ड के लिए करूं तो बताओ, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी आउटसाइड दिस पॉइंट. लेट्स से दिस पॉइंट इज Q. अब इन तीनों में से बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है. ये क्लियर हुआ ना. E inside will be sigma upon epsilon naught. क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? और नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. या फोर, हाँ 4 point Q you have to calculate now. 4 point Q. लेट मी रब दिस ऑफ. अच्छा सेम आ रहा है. व्हाट अबाउट यू JNV NM स्टूडेंट? 4 point Q, what is the net field? This is point P, sorry point Q. बताओ what is the field? JNV Raichur has answered. JNV Yanam and JNV Ramnagar and other students are all remaining. Okay. So let me draw this here at this point. देखो, just a second. This is the sheet of positive charge. This is the sheet of negative charge. Hmm?
नाउ ऐसे नहीं, आप इसे इधर भी दिखा सकते हो नेगेटिव चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है। नाउ इस पॉइंट क्यू पे वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड। नाउ ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज? दिस इज ई नेगेटिव। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, what should be the direction of field? Away, E positive. Now both are same and opposite in direction, so E would be 0. ठीक है, got it? क्लियर है? ये वेक्टर है ना, सो ऑलवेज रिमेंबर, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, रिमेंबर दिस, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम मैग्नीट्यूड। क्लियर है? सो E वुड बी 0 एट दिस पॉइंट ऑल्सो। बताओ, पॉइंट R, अब पॉइंट R पे बताओ व्हाट इज द फील्ड? पॉइंट R पे फील्ड कितनी होगी, सब बताना टोटल। JNV रामनगर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट आंसरिंग, व्हाट हैपेंड टू यू गाइस? हेलो सबरीनाथ, यशवंत, आपको भी आंसर करना है भाई। पॉइंट R से भी सेम ही होगी, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से इस तरफ हो जाएगी, दिस इज पॉइंट R। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दिस इज E नेगेटिव, दिस इज E पॉजिटिव, opposite in direction, magnitude will be 0. Option 1 is correct. Very good. So these types of question can be asked. ठीक है? Now next thing is electric field due to hollow conducting thin spherical shell. Hollow, कितनी सारी चीजें हैं इसमें, होलो है, कंडक्टिंग है, थिन है, स्फेरिकल है, और शेल भी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलो स्फेयर एंड थिन स्फेरिकल शेल? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर सेम। ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल एंड होलो स्फेयर इज सेम, बट इफ इट इज सेइंग दैट दिस शेल इज थिक, which means this thickness you have to encounter, ये थिकनेस आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, बट दिस इज द थिन स्फेरिकल शेल, तो सारा चार्ज कहाँ पे होगा, बाहर होगा, आउटसाइड में, बिकॉज दिस इज कंडक्टिंग। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग भी है तब भी ये चार्ज कहाँ होगा, आउटसाइड ही, क्योंकि इनसाइड में तो जा ही नहीं सकता। इनसाइड में होल्ड करने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं, होलो है अंदर से ही। तो चाहे ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, बोथ द केसेस आर सेम। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी, सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी सेम एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी यूज। ठीक है, सो अगर पॉइंट आउटसाइड है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल R, एंड सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल r, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, इट विल बिहेव सेम एज पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज से फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
स्मॉल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। और ये सारा चार्ज हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे? इस स्फेयर के सेंटर पर, इस सेंटर पर। तो सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई? स्मॉल आर। तो दैट इज व्हाई द फील्ड इज गिवन लाइक दिस। ठीक है। ई इनसाइड, कल ही बताया था, इनसाइड में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो ई इनसाइड विल बी 0। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है सभी को? नाउ द क्वेश्चन टू यू इज दैट at r is equals to 5 capital R, ठीक है, what is the field? And this field you had to express in terms of E of surface, ठीक है, which means EP is how many times? Let's say x time of E of surface. Then find the value of x. बताओ। Anyone? Try to do it. What is the value of x? Okay, very good, JNV Ramnagar students. What about others? What about others? JNV Yanam. अच्छा, ये कंफ्यूज कर गया आपको। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं जेएनवी रायचूर। देख, दिस स्मॉल आर इज गिवन एज 5 आर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? वैल्यू ऑफ आर इज 5 आर। 5 आर विल बिकम 25 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो सरफेस के लिए what should be the value of small r? Small r will become this, small r will become at this point, सरफेस पे होगा पॉइंट, और उसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस हुई? रेडियस। सो क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो, ई एस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज नथिंग बट ई एस डिवाइडेड बाई व्हाट? 25। ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स देन? एक्स की जगह पे क्या लिखा है? इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन, this is coming out as EP is equals to 1/25 into ES. If you compare with this, that is in place of x, 1/25 is written. So the value of x is 1/25. अब क्लियर है? Is this clear to you now? क्लियर है सभी को? Okay, very good. JNV Yanam, you haven't answered this question. Any trouble with this? Okay, got it. Now, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो ये स्फीयर हो गया, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इनसाइड में ही चार्ज होगा।
चार्ज विल नॉट ट्रेवल टू द सरफेस, कंडक्टिंग ही नहीं है, तो चार्ज कंडक्शन नहीं होगा, तो जहां पे चार्ज होगा वो वहीं पे ही प्रेजेंट, तो चार्ज इज गिवन टू द वॉल्यूम ऑफ इट, ठीक है, चार्ज विल बी प्रेजेंट एट द वॉल्यूम। इससे जो ई इनसाइड है वो कितना होता है, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर, ठीक है, एंड ई आउटसाइड सेम, अभी अभी बात की थी, ई आउटसाइड से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसे भी लिख सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ रो, रो इज व्हाट, if the total charge given is q to the volume v, so we can write this, rho is nothing but q upon v, q is nothing but rho into v. Now what is the volume of this sphere? If the radius of the sphere is capital R, volume will be 4 by 3 pi r cube, ठीक है। Now put the value here, so E outside will be 1/4 pi epsilon naught, put the value of q, it is rho 4 by 3 pi r cube divided by r square. This will cancel out. 4 pi and 4 pi will also cancel out. It is coming out as rho upon, because r cube is there, rho capital R divided by, sorry, just a second, a little bit of mistake is there. ये जो होगी ना ये सरफेस पे होगी, बिकॉज आर इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड एट सरफेस, ठीक है, इसे आप ई सरफेस लिख दो, एट एनी कॉमन पॉइंट विच इज आउटसाइड, outside में let's say we have considered this point P which has a distance of small r from the center, so E outside will be written as 1/4 pi epsilon naught q upon small r square. Now q की तो definition same रहेगी, q is the total charge given to the total volume, so जो रो की वैल्यू निकाली थी वो सेम रहेगी, 1/4 pi epsilon naught, it will be rho 4 by 3 pi capital R cube divided by small r square. 4 pi and 4 pi will cancel out. It will become rho r cube divided by 3 epsilon naught r square. This is E outside. ठीक है? So in terms of rho, you can also calculate this E outside, which is rho capital R cube 3 epsilon naught r. This whole term is a constant because r is the radius which is constant. ठीक है? 3 epsilon naught r square. Now you have to find out suppose the rho is given to you as k small r, ठीक है, this is the question, listen to the question carefully, that specific charge, so this volume charge density of a particular sphere which is non-conducting is varies as rho is equals to kr, ठीक है। Now find out the electric field at a point P which is inside this sphere. अब देखो जो भी वेरिएशन होगा, सपोज दिस इज द स्फीयर, ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जैसे जैसे हम रेडियस
सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, विच मीन्स ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज नॉट यूनिफॉर्म नाउ। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे आओगे, सरफेस से बाहर चले जाओगे, अब बाहर तो चार्ज है नहीं, विच मीन्स अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन अ पॉइंट विच इज इनसाइड दिस स्फीयर, कैलकुलेट इट। चलो इसे आपका होमवर्क ही रख देते हैं, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, और ये सबको करना है, क्लियर है। इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द टाइम नाउ? ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद ये क्वेश्चन आप करो, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू is placed at A0, A comma 0, and another point charge small q is placed at 0 comma I. Find out the force acting on q. This is xy plane. Two coordinate are given, so two axes you will take. So most preferably we will prefer the xy plane. ठीक है, one of the charge is present here, A comma 0. One of the charge is present at here, 0 comma A. 0 comma A पे कौन प्लेस्ड है, स्मॉल क्यू। A comma 0 पे कौन प्लेस्ड है, कैपिटल। Now what is the force on this small q, acting on this small q? ठीक है, now to calculate this we have to apply the k r square 3 epsilon. So this answer is for this question na, this question, huh, यशवंत? ओके, ये काफी सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि ई इनसाइड क्या होती है, रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप रो की वैल्यू पुट करोगे, सो ई इनसाइड इज ऑल्सो वेरिंग एज के आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन। दिस इज द वेरिएशन, सिंपल वेरिएशन। ठीक है, व्हाट इट नाउ, अप्लाई कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन कनेक्टिंग द टू चार्जेस। तो उन्हें चार्ज को कनेक्ट कौन कर रहा है, दिस लाइन। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ए, ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, √2 टाइम्स ए, because this is the hypotenuse of this triangle, a square plus a square का square root, so it will become √2 times of e. Now what is the force applied by q, capital Q? So we can say that it is k capital Q small q divided by what is the distance between them, √2a whole square. So force here will be k q small q upon 2a square. Okay, clear? Now, if I ask you that what is the direction of this force, can anyone tell me what is the direction? So for direction vector, na, you have to calculate this particular small r as a vector in vector, and what it should be, it is a I cap plus this small r is nothing but a
I cap plus A J cap. That is why the resultant of it is coming out as square root of A square plus A square, which is root 2A. ठीक है. So for the direction vector, you have to keep the direction vector of this because force is acting along this direction. ठीक है ना. तो इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं? आर कैप इज नथिंग बट आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर. आर वेक्टर इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ. ठीक है. सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस in f vector is equals to k capital Q small q over r square into r cap, then put the value of r here and r square is the magnitude, you will get force in the direction form. ठीक है, in the vector form. क्लियर है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसे करने का? व्हाट इज द सेकंड मेथड ऑफ डूइंग दिस? ये हमारे पास 2 एक्सिस है. फोर्स मेरा इस तरफ आया. नाउ व्हाट इज द एंगल? दिस एंगल डेफिनेटली वुड बी 45 बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर. ये साइड भी है, ये साइड भी है, तो डेफिनेटली ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी. ठीक है. तो दिस इज अ स्क्वायर और स्क्वायर का डायगोनल कितने एंगल पे होता है? 45 डिग्री बिकॉज दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री. सो व्हाट यू विल डू, you will resolve this force into two component, which is fx is equals to f of cos theta cos 45 and f cos 45 is acting in minus I cap. So this is minus I cap and fy is nothing but f sin 45 because one component will be in this direction, f sin 45 j cap. So the net force here is minus of fx I cap plus f of y j cap. ठीक है. Now fx and fy are same. ठीक है. This is nothing but the magnitude of the force f and f you have already calculated magnitude. Put the value here, get the. ठीक है ना. क्लियर है? Any kind of doubt guys in this? Okay. I hope this is clear to you all. If you guys are having any kind of problem, you can ask. यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन. ठीक है. So if you guys having any kind of doubt, you can ask. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive. Bye bye, guys. Take care of yourself. Actually, I'll explain to you in the next class because I have the next class at this 5 p.m. Okay. So JNV Raichur, I will explain the vector part in the next class. Okay. Got it? Okay. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care of yourself.